Hi, this is Brijesh Dalmia from Masterstroke, and thank you so much for joining. And today we have a very special guest, Mr. Shreyash, Fund Manager from Axis Mutual Fund. Welcome, Shreyash. Thank you. It's You're pleasure. you're not looking only as a fund manager, you're looking dashing. What a personality you have. Congratulations. And of course, we want bigger returns on our portfolio, but we don't mind working and dealing with a hands-up guy like you. Fantastic. So, Shreyas, welcome to the show, Masterstroke. Just a brief idea about Masterstroke. We have a strong membership of 2,200 people who are using services of Masterstroke. We have a very good community. As someone said, that there are two kinds of distributor. One, they are distributors, and second, they are Masterstroke distributors. So the positivity, the loyalty, the way they do business is quite different, and we have a lot of them today listening to you today, Shreyas. So Sure. Shreyas, markets are all-time high. Yeah. So my first question starts with you. What is your view? Okay. So, see, as far as India is concerned, and especially the valuations are concerned, so it's not about the market level also, it's a valuation. And on India, the valuations have almost always has been on the higher side compared to the other countries, both on the absolute and relative terms. But there are some nuances in this valuation. So if we look at headline valuations, then the valuations are actually not extraordinarily high, especially in the large cap segment. The large cap segment, which is benchmark, actually in which the benchmarks, if you notice, then it is dominated by financial services, IT services, FMCG, auto OEM, which are consumer-oriented businesses. So if you look at valuations in this segment, then the sector which are primarily in B2C segment, including retail credit growth driven financial services, FMCG, and part of consumer businesses, the valuation in most cases are same or lower than pre-pandemic level. While in case of auto and IT, it is somewhat higher than pre-pandemic level. So it is observed that valuation mostly in the investment and export part of economy is higher than the pre-pandemic. Now, talking about flows, while domestic flows have accelerated multifold, the FII flow in the market has not been great in last 2 years since the environment of rising interest rates started. And since FII flows are mostly in large and mega caps, this segment has underperformed. And so fundamentally, most consumer-oriented business like financial services being in large and mega cap segment, you will notice that there is not much re-rating in this, and it is also to do with the FI flows, which is also to do with the rising interest rate cycle. So hence at this juncture, when one look at market, then one need to be cautious, definitely. But one need to be more cautious, especially in the investments are being done from what time period perspective. So if it is from near-term perspective, then obviously one need to be cautious. While it is always recommended that instead of taking call on the market levels, investors should invest basis financial goal, time horizon should be higher, and then these errors gets evened out. All right. Interesting. So, Shreyas, what I will do today is that I will try to play the devil's role in good intents. Sure. I want to extract more from you, to Definitely. learn from you, rather than telling you that no, you're wrong. So I want to ask you questions to clarify my own doubts from you. So please allow me to do that. Sure. Shreyas, in the past, we have seen that when the markets are good, fund houses are also positive, and they give a very muted response that, long term market still looks good, and they will come out with rationale of market valuations. And after 6 months, market falls by 20%. All will say that look at the market valuations 6 months back. Hmm. What can go wrong in the next 6 months, 1 and 12 months? See, 6 to 12 months at any point in time. Again, this question you asked today, 1 month ago, or 6 months ago. Always there are various events which we keep on discussing based on, and especially the right your question is on the 6 months, because beyond that you generally don't predict many events. So now, if you now start looking at India events, then definitely election is the definitely a event, right? So let me And clarify. yeah, I'm not talking about events. I understand Black sure. Swan event, financial Hmm. crisis, Asian crisis, political crisis. Those are different. But Right. purely on the valuation, because market needs a trigger to Right. readjust itself in the valuation matrix. So Yes. something will happen, and market will find a reason that because of this, now we will correct the valuations. Hmm. So on the valuation perspective,
And the message starts coming from the Economic Times or the Mint or the fund houses that 6 months back valuations were stressed. Do you think that in the near future you might think that no, the earlier valuations was higher, or you are comfortable with the current valuations? So that's where in my starting commentary, actually, I went into the details of valuation. So if you see a segment of market which is largely mega and large cap oriented, where FII flows has not been great, there actually, if you look at the valuations, they are not much way higher. In some cases, actually, it is lower than pre-pandemic. So financial services in mass it lower than pre-pandemic valuation, right? IT services, FMCG is lower than pre-pandemic. IT services and auto OEMs are marginally higher than pre-pandemic. So mega cap and large cap, in my opinion, the valuations are not a concern. The way Small and mid. it is in the yes is especially in the investment and export part of economy, because those segments got re-rated big time. Means the companies which earlier used to get traded at 10, 15 P are now at 20, 30 P or more in some cases. So this is where the valuation definitely are higher. So To put it in different perspective, now if you look at Nifty or BSE 100, BSE 100, which is a representation of large cap. Now large cap last 2 years, I think the CAGR is less than the liquid fund returns already. So that's what it reflects, that yes, when we look at the market, we end up looking obviously mostly at the mid small cap segment, the way 8.5% CAGR it has generated in last 2 years. But actually, large cap has not gone much. Its return has been actually subdued in last 2 years. So, friends, the message is loud and clear. On the valuation perspective, large caps are not highly valued, and stretch is not there. So this is one message from the session. Shreyas, you are coming out with a manufacturing fund IPO, NFO rather, I should say. And we are every day in the newspaper reading about the $5 trillion economy India is moving towards in the next 4 years. What can happen? What can transform because of this $5 trillion economy and into the manufacturing sector? What do you foresee? Actually, if you look at India's growth, last decade versus this decade, again this decade it's just 3 years which has passed. But if you look at last decade, over substantial period of last decade, actually exports and investment part of economy has underperformed the consumption part of economy. Post-COVID, for because of various reasons, actually, the investment part and export part of economy has done well. There are multiple reasons to it. One is rightly so Indian policy making, which has been there right from last 8 to 10 years in favor of Make in India, infrastructure investment, and so on. Apart from that, along with it, what actually also helped is post-pandemic, especially when the trend of supply chain augmentation worldwide started. Then among many other Southeast Asian countries, India also surfaced again as a potential candidate where one can diversify their supply chains as such. So along with that, there is a labor force, there is a local demand, which is also growing. And all in all, when it comes to the India GDP growth, which was probably earlier more driven by consumption than investment and export, in this decade till now, the exports and investment has done extremely well. And if this trend continues, then definitely one need to look at manufacturing sector in more detail. So the basic if is if this trend continues as such. And if you believe that this trend continues, then manufacturing sector actually brings in multiple benefits. So it actually brings in multiple benefits in terms of its repercussion on the wider segment and the inclusion or the economic inclusion. So currently, you are noticing that mostly the large cap oriented or the when we say K-shaped recovery, the upper part of K, so to say, oriented stocks have done well.
But if manufacturing sector does well, then the job creation happens over in suburbs as well. It happens for the people who have different and varied skill set, and not only the service sector oriented. And that's where the employment generation at various level, it then results into the inclusive growth. So it will have a wider repercussions on economic growth. Not only in the manufacturing, it will have its own repercussion in the consumption part of economy as well. So, Shreyas, I'm a little curious. Sure. Basically, corporate profitability and GDP is more or less related. So let's say, and correct me if I'm wrong, because you have a very strong understanding of this. Mm-hmm. Let's say GDP is 6-7%, inflation is 5-6%. So you talk about a growth in the economy at the rate of, let's say, 12%. Yeah, right. And what I have been understanding over the last few decades is that ultimately it reflects the corporate profitability. So Right. if the corporate profitability overall is 13%, GDP is 13%, so maths is equal. So some company will do better, some company will do worse. The average is 13%. Yeah, right. Do you mean to say that, and let us assume that the Indian GDP and the growth rate is going to be the same, plus minus 0.2, 0.3%, which is not a very big difference. Do you mean to say that in the next 3, 4, 5 years, because of India going to $5 trillion economy, manufacturing will outperform some of the other sectors, and some other sectors may do worse than manufacturing because ultimately the returns are going to be the same in the economy. Sure. GDP is going to be the same. So, do you mean to say that certain sectors will do well even though the GDP growth and the corporate profitability overall remains the same? This is the sector to look at. Okay. So there are, when you ask this question, there are two perspectives in it. One is GDP, one is earning growth, which is associated with GDP. And second is obviously as an investor, our interest is more in the equity market returns as well. It is Yes. not only about the profit growth. Now, A on little the Hindi and English will help. Some of people are, yeah, little bit Hindi English. definitely. So, अपना focus as an investor obviously is in the GDP corporate growth, और अपना focus obviously स्टॉक मार्केट रिटर्न एंड अपने पोर्टफोलियो रिटर्न्स पे भी ज़्यादा होना चाहिए। अब ये कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें कि कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी कैसी चेंज हो रही है इन लास्ट 2 इयर्स। सो पोस्ट पैंडेमिक अगेन हमने देखा है कि कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी इन इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपोर्ट पार्ट ऑफ इकोनॉमी के जो ओरिएंटेड सेक्टर्स है उनकी ज़्यादा बढ़ी, और उसकी वजह से ऑलरेडी इन दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमी आपने री रेटिंग देखा है। जैसे मैंने बताया कि जो पहले स्टॉक 10 पी 15 पी पे हुआ करते थे, वो अभी 20 पी 30 पी 35 पी, और कुछ इन सम केसेस जहाँ पे मार्केट के पास ज़्यादा ऑल्टरनेट नहीं है, वहाँ पे तो और ज़्यादा पी है। अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। कैसा है कि कुछ सेगमेंट में आप जब कॉर्पोरेट एंड जीडीपी की बात करते हैं, उसका मार्केट में रिप्रेजेंटेशन होता नहीं है। तो ये भी बहुत बड़ा एंगल प्ले करता है कि देर इज अ सेगमेंट ऑफ इकोनॉमी, उसमें कंपनी लिस्टेड है कि नहीं, और उसका प्रॉफिट पूल लिस्टेड स्पेस में है या वो अनलिस्टेड स्पेस में है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप देखें तो डेफिनेटली अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अच्छा करेगा तो मोर कंपनीज अच्छी करेंगी, पर उसका ऑब्वियसली कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी में भी फायदा होगा। आपने ऑलरेडी देखा होगा कि इंडिया का कॉर्पोरेट प्रॉफिट टू जीडीपी जो लास्ट पूरे डिकेड में नीचे जा रहा था, वो एक्चुअली इन लास्ट 2-3 इयर्स ऊपर आया है अगेन, कि कॉर्पोरेट प्रॉफिट टू द जीडीपी ये रेशियो जो रहता है वो अभी वापस ऊपर आया है। अब ये ट्रेंड अगर कंटिन्यू हुई तो स्पेशली अगर ऑल द सेगमेंट ऑफ इकोनॉमी, जैसे मैंने बताया कि मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट्स भी अच्छे करे कंज्यूमर के साथ, तो डेफिनेटली आपको वाइड बेस्ड और ब्रॉड बेस्ड जीडीपी ग्रोथ दिखेगा। अब आते हैं मार्केट रिटर्न के बारे में। अब मार्केट रिटर्न में एक ऑब्जर्वेशन मैंने बताया कि डेफिनेटली इन सम सेगमेंट्स री रेटिंग तो हो गया है। अब मार्केट का जो रिटर्न्स रहते हैं वो दो चीज़ों पे डिपेंड रहते हैं। एक, आपके पोर्टफोलियो में, आपके कंपनीज में और सेक्टर्स में, वॉट एवर आपने थीम चूज किया है, वो कंपनीज का रिलेटिव अर्निंग ग्रोथ ज़्यादा है कि नहीं कंपेयर टू अदर सेक्टर। सो जैसे अगर कंजम्पशन सेक्टर से या फिर फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर से अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने अच्छा किया,
तो दैट बिकम्स फर्स्ट एंड मोर इम्पोर्टेंट पैरामीटर कि आपको स्टॉक मार्केट में भी वो रिटर्न्स में रिफ्लेक्ट होगा कि नहीं। अगर ये किया तो डेफिनेटली वो स्टॉक मार्केट में रिफ्लेक्ट होगा डिस्पाइट ऑलरेडी द वैल्यूएशन गोइंग अप, क्योंकि हमने ये, अगेन दिस इज मोर बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल एनालिसिस, कि हमने ये पाया है कि अगर जो सेक्टर में रिलेटिव अर्निंग ग्रोथ ज़्यादा रहती है वो सेक्टर में जनरली आपने जैसे आप लास्ट डिकेड में देखिए कि जो कंपनी सस्ती थी वो, उनका अर्निंग ग्रोथ नहीं था तो वो सस्ती कंपनी और सस्ती होते जा रही थी, और जो कंपनी का रिलेटिव अर्निंग ग्रोथ जा रहा था वही पूरा क्रूज जाते थे। तो दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर कि रिलेटिवली ग्रोथ है क्या। अभी अगर कंज्यूमर सेक्टर जो अंडर परफॉर्म किया है, जो मैंने आपको बताया लार्ज कैप और मेगा कैप में ज्यादातर रिप्रेजेंटेशन है, अगर उनमें भी ग्रोथ आना शुरू हुआ और उनमें भी अगर ग्रोथ आया, तो मैं ये नहीं बोल रहा कि मैन्युफैक्चरिंग का ग्रोथ कम होगा या नहीं होगा, वो एक बात अलग इशू होता है, रिलेटिव ग्रोथ एज एज आई सेड की इंपॉर्टेंट। उनमें अगर प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव होने की शुरुआत हुई, और जैसे मैं बता रहा था कि उसमें से कुछ कुछ सेगमेंट अगर वैल्यूएशन में आपके फेवर में है, तो इन दैट सिनारियो इवन दैट सेगमेंट विल स्टार्ट परफॉर्मिंग। तो इट इज, जो सेक्टर रोटेशन रहते हैं या फिर जो सेक्टर, कौन से सेक्टर इन नियर टर्म अच्छे करेंगे, ये रिलेटिव वैल्यूएशन और रिलेटिव ग्रोथ, ये दोनों चीजों पे इम्पोर्टेंट डिपेंड रहते हैं। Very well put, Shreyas. I must tell you that I thoroughly enjoyed your answer and the perspective that you gave in terms of valuation metrics and relativeness and the market P. Some companies are rewarded from expansion of P. Probably as if I have to summarize one point, that the P can be expanded for companies which are growing, and that I really loved your answer the way. Shreyas, but again, as a devil's question, market is all-time high. And this program is for mutual fund distributor, and if they are convinced, they will promote the schemes to their investors, and so they need to be convinced first. Any which way, mutual fund distributors are themselves thinking markets are expensive or overheated or on all-time high. Forget about expensive or other things. It is at all-time high, and they have seen in the past that when they put clients' money in an all-time high index, generally returns are hard to come by. Hmm. Why have you chosen this time to launch a manufacturing NFO? अभी अगर आप कोई भी एनएफओ, मैन्युफैक्चरिंग हो या कोई भी, फ्रॉम द इन्वेस्टर्स पर्सपेक्टिव, अगर मैं इंडिविजुअल इन्वेस्टर, द वे आई वुड लुक एट इट इज investing in NFO first of all, or existing schemes by way of your SIPs, whatever you're doing, is same decision। कि ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ अलग डिसीजन नहीं है, वेदर द मार्केट लेवल इज हाई और लो। आप अगर SIP की ये कर रहे हो, आज की तारीख में इन्वेस्ट कर रहे हो, मनी तो सेम स्टॉक्स में Very इन्वेस्ट well कर रहे हो और said. सेम मार्केट में Yes, इन्वेस्ट कर रहे very हो। well एज said. लॉन्ग वेर एज इन्वेस्टर इज टेकिंग डिसीजन टू अलोकेट मनी टू इक्विटी एज असेट क्लास based on portfolio allocation basis as explained earlier, तो मार्केट लेवल में नॉट मैटर, बिकॉज आपने वो SIP करे हैं और आपको पोर्टफोलियो में आपको लगता है कि डेफिनेटली वन असेट क्लास का एक्सपोजर कम है, इसलिए मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ। While we at Axis has come out with NFO regularly in last multiple years at various market levels in multiple categories to plug the gaps in our portfolios. So it is a normal, is a regular process in that sense. So I should not, I would look at it more in that manner. Fantastic way to put it. I loved your answer that if you are already investing clients' money in any other fund, it's as good as investing at 66,000, 65,000 index. So NFO manufacturing is just a theme and your money can go. I like your answer. Shreyas, there are so many sectors and so many thematic funds. And when I look at 5-year returns and 10-year returns, it is almost the same. And each of these NFOs and each of these sectors started with a theme, and they claimed that this will do better over the next 5-10 years. But when I go back in history, that if I invested in a tech fund or a X fund or a Y fund or a mineral fund or energy fund, 10 years, the return is almost the same, 12%, 13%, and 14%. With that perspective in mind, why should one diversify into the manufacturing thematic fund? Because any which way the risk is high. And when you look back in 10 years, you might get the same return. And there was one more question which I will put it with is mostly, and you can clarify, if this is going to be a mostly tilted towards a large cap, which is difficult to beat the index, first of all, then why one more fund? Sure. तो एक्चुअली ये सवाल सबसे अच्छा सवाल है, क्योंकि ये सवाल हम भी
अपने आप से पूछते रहते हैं कि वाइल नॉट ओनली दिस एनएफओ, मल्टीपल एनएफओज व्हेन वी कम आउट विद एनी एनएफओ फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू। तो फ्रॉम इन्वेस्टर परस्पेक्टिव, जैसे मैंने बताया कि पहले तो आप एनएफओ में डालते हो या इसमें डालते हो, उसमें एक्चुअली इतना फर्क नहीं है। पर नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि आप अगर थीमेटिक में या फिर सेक्टर में अगर पैसा अलोकेट करते हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन्वेस्टर शुड लुक एट एडिशन ऑफ एनी न्यू स्कीम, अगेन नॉट ओनली एनी दिस फंड, क्योंकि आप नए पैसा सेम स्कीम में डाल रहे होंगे या नए स्कीम में डाल रहे होंगे। तो वो सेम स्कीम में है, नए स्कीम में है, एग्जिस्टिंग एन एफ थीमेटिक फंड में है या फिर न्यू थीमेटिक फंड में है, द डिसीजन हैज टू बी ऑन द पोर्टफोलियो परस्पेक्टिव बेसिस। वेदर आपका न्यू स्कीम है जहाँ पे अभी पैसा जा रहा है आज की तारीख में, इज एडिंग और हेल्पिंग द डाइवर्सिफिकेशन, और इट इज हेल्पिंग इन कॉम्प्लीमेंटिंग देयर एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो। सो आई वुड अर्ज इन्वेस्टर टू लुक एट, एंड स्पेशली आपके जो एमएफडीज है तो उसमें टू लुक एट देयर फाइनेंशियल एसेट इन डिटेल एज टू हाउ मच एक्सपोजर दे हैव टू इक्विटी एसेट क्लास एट फर्स्ट, बिकॉज फॉर बिगिनर्स, बिकॉज उसमें क्या है कि बहुत सारा इन्वेस्टमेंट हाइब्रिड फंड्स में भी रहता है, उसमें इक्विटी का प्रोपोर्शन कितना है। तो ये फर्स्ट लेवल का एनालिसिस हो गया। दूसरा लेवल का एनालिसिस, उसमें मिड स्मॉल लार्ज कितने हैं। एंड देन थर्ड लेवल ऑफ एनालिसिस विच इज मोर न्यूआंस, वो एक्चुअली करने के लिए ज़्यादा डेटा पॉइंट का असेसमेंट करना पड़ता है कि आपके पास equal exposure or not equal actually, but right exposure of all component of GDP, consumption, investment, exports है कि नहीं। क्योंकि आपके पोर्टफोलियो में अगर लार्ज कैप ओरिएंटेड स्कीम है तो आप पाओगे कि मोस्टली द लार्ज कैप ओरिएंटेड स्कीम्स है उसमें फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर रहता है, आईटी सर्विसेज सेक्टर रहते हैं। एंड उसमें एक्चुअली जैसे मैं बता रहा था कि कंजम्पशन ओरिएंटेड थीम ज़्यादा रहती है, तो अगर आपके पोर्टफोलियो में लार्ज कैप ओरिएंटेड है तो कंजम्पशन ओरिएंटेड ऑब्वियसली एक्सपोजर ज़्यादा है। तो आप अगर इन पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो और आपको पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना है, तो सिंपलिस्टिकली हम क्या सोचते हैं कि चलो अभी मिड स्मॉल में डाले क्या, बट मोर न्यूआंस्ड वे ऑफ लुकिंग एट इट वुड बी कि आपके पास सारे सेगमेंट ऑफ इकोनॉमी का रिप्रेजेंटेशन राइट प्रपोर्शन में है क्या। ऐसा नहीं कि वन थर्ड इज राइट, द प्रपोर्शन में बी इन प्रपोर्शन टू द जीडीपी। अब जीडीपी में कंजम्पशन का एक प्रोपोर्शन ज्यादा है और मैन्युफैक्चरिंग और इन्वेस्टमेंट का कम है, बट आपके पोर्टफोलियो में वो सब सफिशियंटली है कि नहीं। अगर वो नहीं है तो ऐसे फंड को चूज करना चाहिए। दूसरी बात, जब हम लॉन्च करते हैं या फिर कोई फंड की तरफ देखते हैं, कोई भी इन्वेस्टर, तो एक रहते हैं कि सेक्टर फंड। अब सेक्टर फंड जो रहते हैं वो नैरो थीम हो जाती है, राइट। क्योंकि वो एक पर्टिकुलर सेक्टर में फाइनेंशियल सर्विसेज, आईटी सर्विसेज, ऐसे पर्टिकुलर सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं। बट जब आप थीम में इन्वेस्ट करो, जो थीमेटिक फंड एज अ कैटेगरी है, तो अब थीमेटिक फंड कैटेगरी में क्या है कि जनरली मल्टीपल सेक्टर्स क्लब किए जाते हैं, और मल्टीपल सेक्टर्स क्लब करने के कारण वो थोड़ा डाइवर्सिफाइड हो जाता है। एंड इसीलिए अगर आप थीमेटिक फंड चूज कर रहे हो तो वो थीमेटिक फंड में कितने मल्टीपल सेक्टर है, अगर एक्सक्लूजन है तो क्या एक्सक्लूजन है, और अगर उसमें ऑल द थ्री सेगमेंट ऑफ इकोनॉमी जैसे कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, एक्सपोर्ट, सबका रिप्रेजेंटेशन है कि नहीं। क्योंकि जितना नैरो करोगे तो साइक्लिकलिटी ज्यादा बढ़ेगी, जितना वाइडर रहता है तो साइक्लिकलिटी कम रहेगी। तो अब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अगर आते हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी जब हमने फंड लॉन्च किया तो हम यही सब एंगल से सोच रहे हैं कि ये फंड में क्या सेगमेंट ऑफ इकोनॉमी और उसमें इन्वेस्टमेंट, कंजम्पशन एंड एक्सपोर्ट, सारे सेगमेंट ऑफ इकोनॉमी का रिप्रेजेंटेशन है कि नहीं। और अगर है तो वो एग्जिस्टिंग फंड से क्या डिफरेंस है। दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि आप अगर आपने जो एक ऑब्जर्वेशन बताया कि 10 साल में रिटर्न सेम है, तो अगर 10 साल में रिटर्न सेम है का एक कारण ये हो सकता है कि आपके एग्जिस्टिंग फंड एक डाइवर्सिफाइड फंड और वो थीमेटिक फंड के पोर्टफोलियो सिमिलर है, तो रिटर्न भी सिमिलर ही बनेंगे। तो फ्रॉम बोथ दिस काउंट, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग का इंडेक्स देखें, तो मैन्युफैक्चरिंग के इंडेक्स में आप पाओगे कि सर्विस सेक्टर उसमें है नहीं, जैसे फिनेंस सर्विसेज, आईटी सर्विसेज, रिटेल से सर्विसेज। नाउ अगर आप देखोगे कि तो लार्ज कैप ओरिएंटेड स्कीम में ये सेक्टर जनरली ज्यादा होते हैं एट बिकॉज बेंचमार्क में ही ज्यादा है। तो इन दैट सेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में
generally 80% of fund is probably not in this scheme, while it will be in themes or in sectors which are actually away from this. अब वो सेक्टर कौन से हैं वो देखना नेक्स्ट लेवल एनालिसिस है। तो अगर आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर देखोगे का बेंचमार्क, तो उसमें बड़े सेक्टर आते हैं ऑटो, ओईएम, एंसिलरी, कैपिटल गुड्स, इन्वेस्टमेंट, हेल्थ केयर भी आता है, मेटल माइनिंग है, केमिकल है, ऑयल एंड गैस है, कंज्यूमर ड्यूरेबल है। अब इसमें मिक्स ऑफ कंजम्पशन विच इज ऑटो, ओईएम, कंज्यूमर ड्यूरेबल, उसका वेटेज शायद वो इंडेक्स में कम होगा, बट देर इज अ इन्वेस्टमेंट ऑल्सो, कैपिटल गुड्स, और एक्सपोर्ट्स भी है, क्योंकि ऑटो, एंसिलरी, केमिकल, टेक्सटाइल ये सारे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर है। तो जनरली ये रिलेटिवली डाइवर्सिफाइड ऑन वेरियस सेगमेंट ऑफ इकोनॉमी है, एंड देर इज अ क्लियर कट एक्सक्लूजन एज वेल। तो इन इन्वेस्टर माइंड दे कैन पोजिशन इट as a complementary to their current portfolio if they want to diversify away from especially the large cap oriented schemes. Nice. Shreyas, again on the devil side, Hmm. पैसा तो डाल दिया, Hmm. निकाले कब? What is the indicator an investor or a mutual fund distributor? Because sector fund सबसे ज्यादा रिस्की होते हैं, Hmm. then the thematic fund and then the diversified fund. Hmm. तो ऑब्वियसली आप अगर रिस्क में देखेंगे तो आपने जैसे सही में आइडेंटिफाई किया कि सेक्टर स्पेसिफिक इज रिस्की, क्योंकि सेक्टर की साइकिल तो एक साइकिल प्ले कर रहे हो। अब थीमेटिक में आप, जैसे मैंने अपने 4-5 सेक्टर मैंने हाईलाइट किए, आप वो 5 सेक्टर की साइकिल हाईलाइट कर रहे हो वर्सेस फिनेंशियल सर्विसेज या फिर दूसरे कुछ सेक्टर है वो एक्सक्लूजन में आ गए, वो 80% में नहीं रहेंगे, 20% में रह सकते हैं। तो ऑब्वियसली उसकी वजह से साइक्लिकलिटी एलिमेंट इज डेफिनेटली हायर देन नॉर्मल डाइवर्सिफाइड फंड। मेरे हिसाब से अगर कोई भी थीमेटिक फंड में अगर आपको वो कॉल लेना है कि ये थीमेटिक फंड से निकले कि नहीं निकले और कब निकले, एंड दैट कॉल ऑब्वियसली एट योर एंड इज थीमेटिक फंड से निकलना है कि नहीं बाहर, और हमारे लिए वो कॉल है ये थीमेटिक फंड ऑब्वियसली वी रन इट or we try to design it. Obviously, you cannot remove all the risks in it, but we try to design it in a manner कि ये स्टेबल रहे, ऐसा नहीं कि एक साइकिल में बिल्कुल ही ना चले। तो एंड अगर नहीं चले तो फिर वो भी क्लैरिटी होनी चाहिए कि क्या क्लैरिटी में नहीं चलेगा या क्या क्लैरिटी में ये नहीं कर सकता है अच्छा। तो इन दैट कॉन्टेक्स्ट अगर आप अगेन गोइंग बैक टू द सेक्टर, द बेस्ट केस इज टू लुक एट द सेक्टर्स, और वो सेक्टर पे आउटलुक कैसा लगता है। तो जैसे मैं बता रहा था कि ऑटो, ओईएम एंड एंसिलरी, कैपिटल गुड्स, हेल्थ केयर, मेटल माइनिंग, केमिकल, ऑयल एंड गैस, कंज्यूमर ड्यूरेबल, अभी ये एक स्पेसिफिक सेगमेंट है। इसमें से अगर मोर देन 2-3 सेक्टर अगर अच्छे नहीं करेंगे तो डेफिनेटली ये कैटेगरी विल नॉट बी डूइंग वेल। सो वो एक ध्यान में रखना चाहिए कि अगर आपको कभी भी एग्जिट करना है ऐसे फंड्स में से, कोई भी थीमेटिक फंड में से, तो उसमें से जो लार्ज आपके पास तो बेंचमार्क का वेटेज रहता ही है, तो लार्ज बेंचमार्क में जो वेटेजेस है उसमें वो अगर सेक्टर्स अच्छे नहीं कर रहे ऐसा लग रहा है, तो डेफिनेटली दैट इज द टाइम नॉट टू गेट आउट ऑफ दोज फंड्स। So my final question, and then we will pick up a couple of questions. Interesting Sure. question in the chat box Hmm. and the Hmm. Q&A. Hmm. Two-part question. One, what you expect to be a typical component of a large, mid, and small cap in the manufacturing sector? Number one. Hmm. Number two, you said that portfolio overlap. Hmm. So you expect that if you invest in a manufacturing sector, the portfolio overlap can be lower. What can be that element? For example, an investor is having an X amount of portfolio into 5 different fund house with 10 different schemes in large cap, small cap, mid cap, a couple of thematic funds. So, and India's universe of stock is very less. 200 and 300 stocks are constitutes most of the mutual fund portfolio. What is the portfolio overlap Sure. you expect in in a diverse? If I have a diversified portfolio, if I invest in a manufacturing fund, what alpha can I generate by having these 10 stock or 5 stock? What can be the percentage of those stock which is not there in my portfolio? डेफिनेटली। तो ये भी बहुत रिलेवेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जैसे पहले क्वेश्चन आपने पूछा था उसके आंसर में पार्टली यही चीज की तरफ आ रहा था कि कैसे देखा जाए ये स्कीम को। तो अगर आप सिंपलिस्टिकली, सो देर आर 2-3 वेज वी यू जनरली कट, और आपका अपना इन्वेस्टमेंट का कट करते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप अलोकेशन,
दूसरा जैसे मैंने बताया वो इजी है, क्योंकि दिस इज स्टैंडर्डाइज कैटेगरी, अभी तो रेगुलेटर ने अच्छी तरह से स्टैंडर्डाइज कर दी है कैटेगरी। दूसरा कट आप निकालते हैं जैसे कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, एक्सपोर्ट, वो एक देखेंगे। तो अगर लार्ज मिड स्मॉल अगर आप देखेंगे तो जनरली मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स जो है वो एक्चुअली रफली, अगेन इट्स नॉट एग्जैक्टली, रफली 70% एंड ऑड प्लस वुड बी लार्ज कैप, 25% ऑड वुड बी मिड, एंड मिड प्लस स्मॉल वुड बी द रेस्ट बेसिकली। अब इसमें अगर आप देखेंगे कि वेदर इट इज सिमिलर टू अ टिपिकल फ्लेक्सी कैप कैटेगरी फंड, क्योंकि फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में भी रफली ऐसे ही एक्सपोजर होता है, राइट। पर अब उसके अंदर डिफरेंस है कि अगर आप टिपिकल लार्ज कैप देखेंगे, अगेन आई विल गो बैक टू द सेम थिंग, जो एक्सपोजर रहता है उसमें फाइनेंशियल सर्विसेज, आईटी सर्विसेज, रिटेल, ये सब की लार्ज सेक्टर्स रहते हैं। while और मोस्ट ऑफ द मेगा कैप्स कंपनी, जो 1 लाख करोड़, 2 लाख करोड़, 5 लाख करोड़, ऐसे जो मेगा कैप्स कंपनी है वो ये सेगमेंट में है, फाइनेंशियल सर्विसेज, आईटी सर्विसेज, रिटेल वगैरह में। तो इसमें अगर 70% है अगर लार्ज कैप, तो वो जो मोस्ट ऑफ दिस मेगा कैप कंपनीज आर नॉट देयर, प्रोबेबली ओनली ऑटो ओईएम इज द ओनली सेक्टर जो मैं हाईलाइट कर सकता हूँ जिसमें आपको एक्चुअली मेगा कैप कंपनी मिलेगी, और एक आध दूसरे कैपिटल गुड्स में मिलेगी। But most of the segment are large cap, but not exactly the mega cap, especially in this financial IT services retail. So to that extent, अगर लार्ज कैप ऐसा लगे कि अरे लार्ज मिड स्मॉल में तो ये फ्लेक्सी के करीब जा रहा है, पर एक्चुअली सेक्टर एलोकेशन में वो बहुत अलग दिखेगा, और इसमें लार्जर और स्मॉलर लार्ज कैप्स ज़्यादा रहेंगे compared to the mega caps, which is typically in the flexi or large cap oriented diversified fund. If you go by the benchmark, as such, the way benchmark is constructed. अभी आपका तो इसीलिए आपको पोजीशन अगर करना है, आपको अगर देखना है, तो आप इस तरीके से डिफरेंस देख सकते हो। दूसरा क्वेश्चन है आपको ऑब्वियसली कि अगर अगर हम अगर अभी हमारा पोर्टफोलियो बना रहे हैं, एंड अगेन इफ आई वांट टू कंपेयर इट बाय अदर फंड्स विच आर लार्ज कैप ओरिएंटेड डाइवर्सिफाइड फंड, तो उसमें कितना सिमिलैरिटी हो सकता है। तो एक्चुअली अगेन आई वुड गो बैक द सेम थिंग, एंड स्पेशली सिंस आवर फंड्स आर एनीवे, यू नो वेयर दे आर इन्वेस्टेड, हाउ दे आर इन्वेस्टेड, then definitely the financial services, IT services, retail is one of the large part of our large cap oriented schemes. And this scheme, manufacturing obviously is 80% plus has to be in the manufacturing, and the schemes which I or the themes which I told you, जैसे ऑटो वगैरह जो मैंने बताई। तो to the extent of again auto, there may be overlap, yes, there may be overlap, but then in terms of others, there will be lesser overlap, and especially by weight, definitely it will be different. By name of the stocks, it may be at a fund house level, obviously the name of stocks may or may not be too different. But when it obviously by weight, अगर आप देखते हो weightages of individual sub segments in the fund, then definitely this will come out. This has to come out actually because of the structure of the manufacturing index and its limitations in terms of exposure to non-manufacturing segment. All right. Interesting. So we'll pick up. You can pick up a few questions from the chat box or the Q&A. One question I will start with is that why a manufacturing thematic fund when diversified funds are doing better? And I will add to this. I did some research and I noticed that over the last 10 years, Resh, there is no thematic fund in the top 5 category. The top category is small cap, then mid cap, large category. Large is almost way down, but a couple of other categories are there, but no thematic fund. So if last 10 years there is diversified funds are doing better, why should one look at a thematic fund? This is a question by, let me check, Sumit Sehgal. Sure. अभी आप अगर देखते हैं कि लार्ज मिड वर्सेस स्मॉल, अगेन दिस इज द इजियर वे ऑफ कटिंग और स्लाइसिंग योर पोर्टफोलियोज वर्सेस द कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, एक्सपोर्ट, जहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है कि कितना एग्जैक्टली एक्सपोजर है हर एक पोर्टफोलियो में। अब ये जो एनालिसिस होता है, फर्स्ट एक्चुअली एक ब्रॉडर मेरा ऑब्जर्वेशन है कि वो ना हर बार आप कब करते हो एनालिसिस, उसमें ये आंसर इसके डिफरेंट हो जाते हैं। Yeah, जैसे आप यही एनालिसिस अगर जनवरी 20 में करते, I तो know. जनवरी 20 में अगर आपने एनालिसिस किया होगा, इसमें तभी एक्चुअली कोविड की फियर भी थी, मार्केट में थी नहीं, फिर भी तभी 10 साल रिटर्न ऑफ लार्ज कैप वाज हायर और मार्जिनली हायर, बट इक्विवेलेंट टू और हायर देन द मिड एंड स्मॉल ऑन 10 year basis also.
राइट? Agree. तो इट डिपेंड्स ऑन वेयर यू स्टार्ट एंड हाउ डू यू सी। जैसे आप आज अगर आप 10 साल का रिटर्न देखोगे तो एक्चुअली आप देखोगे कि टेपर टैंटम की वजह से 10 साल में एक्चुअली 10 साल पहले 2012-13 में मार्केट में बहुत ज्यादा, 12 में स्पेशली इफ आई रिकलेक्ट राइट, वो ट्विन डेफिसिट टेपर टैंटम वाज वन ऑफ द रीजन व्हाई द मार्केट वाज डाउन। सो आप कब वो एनालिसिस करते हो, उसमें बेस में क्या है, अभी क्या है, ऐसे मल्टीपल चीजें उसमें चेंज होती रहती है। बट दैट इज जस्ट वन ऑब्जर्वेशन आई वांटेड टू शेयर। आई डोंट वांट टू से दैट कि योर अदर ऑब्जर्वेशन इज राइट। थीमेटिक फंड में कैसे देखना चाहिए कि 10 साल में अगर इन्वेस्ट करना है तो तो अगर आप तीनों सेगमेंट में, यानी अगर कोई पोर्टफोलियो में लार्ज मिड स्मॉल का एक्सपोजर अगर प्रॉपरली डाइवर्सिफाइड है, तो मेरे जजमेंट में देर इज आपको थीमेटिक फंड कोई भी वो वुड गिव इक्विवेलेंट रिटर्न अगर वो ओवर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, अगर आपके पास वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है तो। अगर आपके पास वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो नहीं है, अगर, इसलिए मैं शुरू में बता रहा था, जैसे मोस्टली क्या होता है कि बिकॉज ऑफ से exposure to multiple asset class themes, hybrid themes, large cap oriented themes. Even flexi caps are broadly 50-70% large cap oriented. So at a portfolio level in the investors portfolio, वो पोर्टफोलियो अगर डाइवर्सिफाइड नहीं है तो वो केस में द थीमेटिक फंड लाइक दिस कैन एड अ direct difference. So either then the option is to go invest into small and mid more or get into thematic like this. वो ऑप्शन आई वुड लीव इट फॉर फ्रैंकली टू द इंडिविजुअल इन्वेस्टर टू चूज फ्रॉम। आई वुड एट वेरियस पॉइंट इन टाइम मिड एंड स्मॉल, अगर आज की तारीख में तो आप उसमें मिड एंड स्मॉल में आप फाइनेंशियल सर्विसेज भी खरीदते हो और उसमें बाकी भी खरीदते हो। तो वो कॉन्टेक्स्ट में फॉर सम इन्वेस्टर्स व्हेन इट हैज टू बी डन एट अ पोर्टफोलियो लेवल एनालिसिस, द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इट्स अ क्लियर कट वेयर वी आर सेइंग कि उसमें एक्सपोजर 80% प्लस विल बी इन मैन्युफैक्चरिंग, तो इट प्रोवाइड्स अ क्लियर कट डायरेक्ट डाइवर्सिफिकेशन एज सच एट अ पोर्टफोलियो लेवल। बट ऑब्जर्वेशन आपका सही है कि अगर वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है कि जिसमें लार्ज मिड स्मॉल, आई एम नॉट सेइंग इक्वल बट ब्रॉडली दे आर देयर एवरीवेयर, then to that extent over a longer period of time an individual thematic fund may or may not benefit definitely. Sadhana Sachdeva is asking, how will your NFO of manufacturing fund will be different from Axis Business Cycle Fund? अभी ये थीमेटिक फंड में देयर आर मल्टीपल थीम्स, वन इज बिजनेस साइकिल, वन इज special situation, one is this theme, and then there are multiple themes. Now especially the question is specifically versus business cycle. अब business cycle में there are that fund is expected to invest in cycles which may change, and then based on that you are expected to invest in those companies and then exit and in the enter the next cycle. तो वो फंड का एक्सपेक्टेशन ये है कि वो साइकिल रोटेट करे, कि आज अगर मैन्युफैक्चरिंग नहीं चल रहा है तो वहां से निकल के तभी शायद कंजम्पशन चले या फिर फाइनेंशियल सर्विसेज चले, तो वो उसमें रोटेट करे जाए। while this scheme is definitely a totally different, this is we are saying कि ये मैन्युफैक्चरिंग ही है, इसमें बेसिकली आपको सर्विस सेक्टर में ये नहीं रहेगा, ये मैन्युफैक्चरिंग में रहेगा। सो दिस काइंड ऑफ फंड इज मोर अ पोर्टफोलियो अलोकेशन, अगेन आई एम सेइंग दैट कि आपके पास अगर बिकॉज ऑफ द हायर एक्सपोजर टू द लार्ज कैप ओरिएंटेड स्कीम सर्विसेज सेक्टर एक्सपोजर इज वेरी हाई, तो दिस फंड इज मोर अ कॉम्प्लीमेंटरी टू इट। इट्स आप उसको ऐसे देखिए, ये कॉम्प्लीमेंटरी है इन अ पोर्टफोलियो इफ यू आर नॉट एक्सपोज, rather than it is not going to add same thing if your portfolio is large cap oriented. While business cycle, अगर साइकिल चेंज हो रही है तो वो आपके बाकी पोर्टफोलियो जैसा भी दिखेगा एट अ पॉइंट इन टाइम। Okay, there are a couple of questions and we'll close with this. Would you like to give your views and opinion about the existing schemes of focus fund, blue chip fund, mid cap fund, and when investors and MFDs are going to expect good days into श्योर। these schemes? सो अगर आप हमारे लार्ज कैप ओरिएंटेड स्कीम्स देखें तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि लास्ट एंटायर डिकेड जब कंजम्पशन पार्ट ऑफ इकोनॉमी अच्छा कर रहा था
there are multiple parameters which were definitely in favor of our portfolios, which was consumption part of economy doing well. Then there was a good part of investment, which was in quality and growth as an investment style, which has done well in a falling interest rate scenario in entire decade. Somehow, some part of it, जो मैंने अभी while discussing this sector fund, I was highlighting कि investment and export part of economy ये decade में somehow last 2 साल 3 साल से अच्छी कर रही है, तो इसलिए वो oriented stocks अच्छे कर रहे हैं. Interest rate rising environment again has been one of the parameter, क्योंकि सारी चीजें इंटरलिंक भी रहती है. तो ये 2-3 चीजें हमारी फंड के फेवर में जो लास्ट पूरा डिकेड की और फंड्स ने अच्छा किया था. तो अभी for some reasons or other they are not in favor. It's not that we are not changing, we have changed some things at the margin, we have added more sectors, we have diversified away to multiple segments and stocks as well. So we hope that with natural reversal as well as with some other changes, we are doing some work on this more and more. That's wonderful. Thank you so much, Shreyash, for being part of this talk today at Masterstroke. We value your time. And thank you so much, Shreyash. We'll carry on with our agenda.